Life is full of hardships for women like Gulmareen, who live in tough mountain terrain in the north of Pakistan. Their villages located in Hunzanagar Valley are isolated and still don't have any access to electricity, making it even more difficult for them to survive harsh conditions. But thanks to a small project, Gul now takes delight in cooking and other daily household chores. The micro hydropower station has been installed that now supplies clean and cheap energy to her village, called Ahmedabad, making the lives of the residents, especially women, much easier. In the villages, it is the women folk who are responsible for all cooking related activities, and they work really hard, often walking miles to collect firewood on a daily basis. But with the availability of electricity, they have been relieved of this burden. Instead of firewood, Gulmareen now uses electric stove, oven and energy saver bulbs in her home, all powered by the micro hydropower station. This also means she doesn't burn kerosene oil anymore to light a lamp during night, smoke from which was a serious health problem for her and her family. Gul says she doesn't suffer from eye problems and cough anymore that were caused by indoor pollution due to insufficient burning of the firewood. मेरे ज़माने में भी मैं खुद जाके बाग से वो कांटे काट के लाती थी, ला के इसको छोटे छोटे करके इससे बुखारी में हम खाना पकाते थे, सालन बनाते थे, रोटियां बनाते, सारे वो इधर बनाते थे लकड़ी के ज़रिए। इससे हमें छुटकारा मिला है, अभी अल्लाह का शुक्र है। सारा घर में धुआं फैलता था, आंखों में दर्द होती थी, अभी आधा से ज़्यादा आसान हो गया है। अभी मेरा सारा घर का किचन का काम बिल्कुल ही आसान हो गया है। पानी उबालते हैं बिजली के ज़रिए, खाना पकाते हैं बिजली के ज़रिए, इस्त्री करते हैं बिजली के ज़रिए, कपड़े धोते। Social development activist Ghulam Sarwar, who is a resident of Ahmedabad village and has been instrumental in raising the living standard of the people, says the project has been a boon for the village. हम बाहर जाकर या हुंजा में या गिलगित या कोई पाकिस्तान के किसी शहर को देखते, वहाँ रोशनी देखते थे बिजली का, लेकिन हम अंधेरे में डूबे होते, तो कहीं लालटीन कहीं मोमबत्ती इस्तेमाल करते थे। बहुत सारे काम हमें बहुत मुश्किल, हम वो तरह को फलदार दरख्त काट कर जला देते थे। The scenic village of Ahmedabad is located right next to the gushing Hunza River, a major tributary of the mighty Indus River, just opposite the 8,000-meter high, breathtaking mountain peak of Rakaposhi. Environmentalists Ghulam Raza and Inayatullah Beg are glad that due to the power station, forests in the village are now coming back to the life. They claim that no one cuts tree in the village now. तो ये बिजली आने से ये आपके सामने है कि हमारे चारों तरफ इस वक्त सरसब्ज है, जंगल कोई नहीं काटता है। ये बेर का दरख्त है, बहुत पुराना दरख्त है, सूख चुका है, लेकिन लाइट की आने की वजह से इस दरख्त को बंदे ने काटा भी नहीं है, ये इस तरह पड़ा रहा है। Village elders say that the future of their children was earlier at stake. They often used to join their mothers and sisters to collect fuel wood from forests, but now they get enough time to study and finish their school work even after the sunset due to the electric bulbs. अभी फ़िलहाल जितने भी हमें इंसानी सहूलियात जो है वो इंसान की ज़रूरत है वो सारे हमें मिल गए हैं। गांव के अंदर जो है लाइट हो गई, बच्चे पढ़ने लगे, टीवी आ गई, टीवी देखने लगे, स्त्रियां जो है वो ख़वातीन को वो फिर उनको आसानी हो गया। कपड़े धोने में ख़वातीन का बड़ा मसला होती थी, हाथों से धोते थे, अभी मशीन लग गई। All the 144 households of the Ahmedabad mountain village and nearly 110 households in the adjoining Sultanabad and Faizabad villages of the Hunza Valley now have access to electricity from the micro hydropower station, which is presently producing 190 kilowatts. Community elders who look after the project say that they intend to provide electricity to 1,300 more households in Karimabad and Aldit villages of the valley after increasing the power generation to 400 kilowatts in the next 1 or 2 years once the funds are available. Shahana Khan, who is a project development manager with the Aga Khan Rural Support Program, says it is a people's initiative. हम लोगों ने
काफ़ी सारे माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स जो है ना, यूनिट्स कम्युनिटी जिनको ऑन करती है कम्युनिटी, उसमें उनकी पार्टिसिपेशन है, लेकिन AKRSP का टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट कम्युनिटी के मद में। तो इसमें यह है कि ज़ाहिर है आपको पता है माइक्रो हाइडल यूनिट्स जब ऑपरेट होती है, लो कॉस्ट पावर को सप्लाई होती हैं, और वो जो है फ्यूल वुड का इस्तेमाल जो है ना वो कम से कम करते हैं, और केरोसिन ऑयल जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। जो छोटी मोटी घर के काम है वो इलेक्ट्रिक पावर से जो है वो एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, तो उनसे इमिशंस को एक तरफ से इनडायरेक्टली आप इमिशंस को जो केरोसिन ऑयल या फ्यूल वुड से होती हैं वो उनमें कमी। Jamiluddin, who manages development projects in the Gilgit-Baltistan region for the Aga Khan Rural Support Program, says that his organization, in collaboration with the Pakistan's Alternative Energy Development Board and Pakistan Poverty Alleviation Fund, has planned to install around 103 micro-hydropower plants in the upper Indus Basin areas of Chitral district and Gilgit-Baltistan province in the next few years. This will reduce pressure on the depleting forest resources of the country, cut Pakistan's carbon footprints, and empower mountain communities of the Hindu Kush Himalaya region through cheap, clean, reliable, and affordable electricity. Salim Sheikh with the fellow reporter Surya Thunyu, reporting for the thirdpole.net from Hunza Valley, Pakistan.